Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. After result of any exam, sometime when we get the feeling only few people have qualified and most have been disqualified or unsuccessful. Why such feeling comes? Whereas in real sense, there may be large number of people those might have cleared the examination and equally large number of candidates might have not cleared the examination. Why this feeling comes? Let's understand, and why we should not be worried about some results that goes against us. Say in a competition around 8 lakh candidate appeared and around 90,000 or 1,000 candidates passed that examination. It indirectly means more than 7 lakh candidates could not clear this examination. So the ratio of successful and unsuccessful candidate is 1:7 or 1:8. For every one successful candidate, there are 8 unsuccessful candidates. Those are around us. And since the number of unsuccessful candidate is large and the number of successful candidate is less, it gives a feeling that most people have failed. Whereas it is not reality. Because the number of candidates that those could qualify will depend upon number of vacancies and number of times the people called for next days. So this feeling that in this examination large number of candidates have not passed is sometimes based on wrong hype created around us. Sometime in successive exams, the number of candidates successful are higher than preceding years. If vacancies are on rise, then the number of candidates those are successful are also higher. And how we can get that figure? No such figures are released. But how we can estimate that? This estimation comes in how many centers this exam is happening, how many shifts this exam is happening. Say if main exam is happening in one shift, then we can conclude the number of candidates are less than 1 lakh. Usually IBPS has a capacity to accommodate candidates up to 1 lakh in a shift. You must have observed where number of candidates are around 8 lakhs. They are able to conclude the examination in 2 days with 4 shifts per day. So indirectly we can have an inference if candidates are less than 1 lakh, they may be conducting exam in single shift because that takes care of normalization and they need not go into the process of normalization. But once candidates are higher, they may have more than 1 shift. So sometime the number of shifts give you idea whether the candidates are below 1 lakh or above 1 lakh. This is one way of estimation by some people those are keeping eye on the examination. Another way is how many centers this time they have set in. If they have set in more centers than last year, that indicates candidates are more. So unless that data comes, we should not unnecessarily conclude that large number of people are not called. Okay? But if you see the overall feeling, this time I have found many candidates, those could not clear exams in earlier attempts, they have cleared the IBPS clerk this time. So that clue is giving information that this time this is quite possible. The number of candidates those have qualified the IBPS clerk may be higher than last year. This is only a clue. We will give more definitive information once admit cards are released. We will have more information because the number of people those will tell that I have got the admit card, this count
will gives us better feelings and better data. Because some of you are asking, sir, whether 1 lakh candidates have qualified or not, whether less than 1 lakh qualified or more than 1 lakh qualified. At this stage, it is difficult to comment. But my own sense says this time the number of candidates, those qualified IBPS clerk, is much, much higher than last year. Because the type of interaction I am having with people and the type of people those have told that I have cleared the exam, that number appears to be more. So let's wait for admit card release. We will discuss more on this issue. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. जब कोई भी रिजल्ट आता है तो कई बार हमें फीलिंग होती है कि बहुत कम लोग पास हुए, अधिकांश लोग फेल हो गए. ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए एक एग्जाम है, उसमें 8 लाख लोग बैठे हैं और लगभग 1 लाख लोग पास हो गए हैं. तो कितने पास नहीं हुए? 7 लाख लोग. या 1 लाख से थोड़े कम पास हो गए हैं पर काफ़ी लोग पास नहीं हुए. तो कितने पास नहीं हुए? 7 कुछ लाख. इससे क्या इन्फ्लुएंस निकलती है कि हर एक कैंडिडेट जो पास हुआ है उसके सामने 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास नहीं हुए. तो जब हम लोगों से रिजल्ट पूछते हैं तो एक धारणा पैदा होती है कि यार बहुत कम लोग पास हुए, क्योंकि वो 7वां हिस्सा है. वो उन लोगों का 7वां हिस्सा है जो पास हुए पास नहीं हुए. पर असली आंकड़ा क्या है? क्या ये संख्या पिछली बार से अधिक है या कम है? ये कैसे पता लगेगा? अब ये एस्टिमेशन लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आंकड़ा तो रिलीज नहीं हो रहा. तो उसके एस्टिमेशन लगाने के कई तरीके हैं. नॉर्मली अगर आप देखेंगे कि आईबीपीएस की कैपेसिटी क्या है एक शिफ्ट में, एक दिन में एग्जाम कराने की. जितने भी पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं लगभग 1 लाख. जैसे अगर 8 लाख कैंडिडेट का कोई एग्जाम हो रहा है तो नॉर्मली वो 2 दिन के अंदर 4 शिफ्ट में कंक्लूड कराने में कामयाब हो जाते हैं. इसका मतलब है एक शिफ्ट में लगभग 1 लाख लोगों को वो बिठा पा रहे हैं और एग्जाम ले पा रहे हैं. तो यदि किसी एग्जाम में 1 से अधिक शिफ्ट है, इसका मतलब कैंडिडेट का आंकड़ा 1 लाख से अधिक हो सकता है. मतलब ये एक एस्टिमेशन के मेथड बता रहा हूँ आपको मैं, कोई ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन डेटा नहीं है. पर जो लोग एस्टिमेशंस करते हैं वो कैसे करते हैं कि कितनी शिफ्ट में है, उससे कुछ एक अंदाजा लगता है. दूसरा, क्या नंबर ऑफ सेंटर बढ़े हैं. सेंटर बढ़े हैं तो कैंडिडेट बढ़े हैं, वो एक अंदाजा आपको देता है. तीसरा, जब आप लोगों से बात करते हैं, जैसे अब एडमिट कार्ड आएगा, जब आप पूछेंगे आपका कब एग्जाम है, कहाँ एग्जाम है, जब आप एडमिट कार्ड का लोग डेटा देंगे, क्या ये डेटा पिछले सालों से अधिक है? वहाँ से पता लगेगा कि अधिक लोग पास हुए. तो जो अभी तक हमने पूछा कि कौन पास हो गया, कौन नहीं पास हुआ, तो अगर हम उसको देख रहे हैं, उस आंकड़ों को देख रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ये पता लग रहा है कि इस साल आईबीपीएस क्लर्क में ज़्यादा लोग पास हुए हैं देन लास्ट ईयर. ये अंदाजा है, ये कोई पुष्ट डेटा नहीं हम कह सकते, क्योंकि अभी ये डेटा तो कंफर्म होगा जब एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे. 1 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है कि 2 में हो रहा है. अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है आईबीपीएस क्लर्क का तो क्लियर है कि ज़्यादा कैंडिडेट है. 1 में भी हो रहा है और सेंटर बढ़ गए हैं, पर सेंटर कैंडिडेट बढ़ गए हैं, तो भी पहले से ज़्यादा कैंडिडेट है. तो ये कई लोगों के मन में प्रश्न था कि सर आप कहा करते थे कि ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे, ऐसा लग नहीं रहा. पर मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बुलाए गए हैं, क्योंकि जो हमारे पास चैनल के ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं, जो मैंने कमेंट पढ़े, पास कैंडिडेट्स के वो बहुत अधिक है. और ये भी मैंने देखा कि जो लोग पिछले कई साल से पास नहीं हो रहे थे वो पास हो गए हैं. इस बार पास नहीं हुए हैं वो भी संख्या है, मगर वो संख्या क्यों ज़्यादा नज़र आती है? क्योंकि वो तो 7 गुना होनी ही है ना. अगर मान लो 8 लाख में से 1 लाख पास हो गए हैं, फिर भी 7 लाख तो नहीं हुए. बात समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ये कहना कि मेरे को जितने लोगों से मैंने बात की उससे मुझे लग रहा है बहुत कम लोग पास हुए, ये ऐसा नहीं है. पर ये तो ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है कि इस बार ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, और इस साल वैकेंसी भी ज़्यादा है. और जैसे ही अभी एडमिट कार्ड आएंगे, अगले हफ्ते में एडमिट कार्ड आ जाने आईबीपीएस क्लर्क के, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर और ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे.
क्योंकि 2-3 दिन से कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक मैं थोड़ा सा इसका बेसिस आपको समझा दूं, ताकि आपके दिमाग में जो बात है कि कम लोग पास हुए हैं, वो मुझे नहीं लगता सही है। ज़्यादा लोग पास हुए हैं ये सही लग रहा है मुझे। गॉड ब्लेस यू ऑल।